श्री गणेशाय नमः। अथ श्री विष्णु द्वादशाक्षर स्तोत्रम्। द्वादशाक्षर मंत्रस्य ऋषिः प्रजापतिः स्मृतः। देवता वासुदेवस्य गायत्री छंद उच्यते। ध्रुवो बीजं च हृच्छक्तिर्भुक्तिमुक्त्योष प्राप्तये। कृत्वैवं विनियोगस्य प्राणायामं चरिततः। पूरके षोडशावृत्त्या कुम्भके द्वादश स्मृतः। रेचके द्वादशावृत्त्या प्राणायामं विधिं चरेत्। नासाग्रे लोचन कृत्वा मध्ये हृत्कमले स्थितं। ध्यायेन्नारायणं देवं व्यापकं ब्रह्मरूपिणम्। शङ्खचक्रगदा पद्मधरं नीलं चतुर्भुजं। पीताम्बरधरं देवं विष्णुं कमललोचनं। तुलसीदलसंयुक्ता वनमाला सुशोभितम्। सुवर्णमुकुटं रम्यं दिव्यकुण्डलभूषितम्। असङ्ख्यचन्द्रसङ्काश साक्षात् ब्रह्म सनातनम्। कैवल्यमोक्षदं सत्यरूपं विश्वात्मकं विभुम्। अथवा राधिकानाथं द्विभुजं मुरलीधरम्। आजानुबाहुकं दिव्यावदनं श्यामसुन्दरम्। मणिमन्मुकुटं तद्वत् कुण्डलं पीतवाससम्। कस्तूरीतिलकं यस्य ललाटे सर्वमोहनम्। तुलसीमालया पद्मामालया मणिमालया शोभितं सान्दितं कृष्णमन्त्रहितकमले स्थितं। ध्यात्वैवं पुरुषं पूर्णं वासुदेवं सनातनम्। राजमन्त्रजपं कुर्यात् द्वादशाक्षरनामकम्। जपान्ते श्रद्धया युक्तः पाठं कुर्यात् प्रयत्नतः। तं दृष्ट्वा भक्तिसंसक्तोर्वासुदेवः प्रसीदति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओंकारमन्त्रमय पूज्य सदक्षराय। पादत्रयाक्षरमयाय त्रयीश्वराय। वेदत्रयाय त्रिगुणात्मत्रिदेवताय। तस्मै नमो भगवते परमामृताय। नम्याय सर्वजनहितकमलस्थिताय। चाङ्गुष्टमात्रपुरुषाय विभुत्वगाय। ज्योतिर्मयाय तिमिरान्तकनिर्मलाय। तस्मै नमो भगवते परमामृताय। मोक्षप्रदाय सुखदाय धनप्रदाय। ज्ञानप्रदाय सततं परमोज्ज्वलाय। ब्रह्मादिदेव निरकैश्य सुपूजिताय। तस्मै नमो भगवते परमामृताय। भक्तस्य दुःखदलनाय च रक्षकाय। धर्मस्य सन्ततमधर्मविनाशकाय। नानावतार पृथिवीतलधारणाय। तस्मै नमो भगवते परमामृताय। गव्यप्रियाय सकलेप्सितसम्प्रदाय। सत्यप्रविद्धिकरणाय सुमङ्गलाय। कृष्णावतार करुणालय सद्व्रताय। तस्मै नमो भगवते परमामृताय। वन्द्याय सर्वजगतां सुरसत्तमाय। वंशी विभूषितकराय मनोहराय। नानाप्रपञ्चविलयोदयकारणाय। तस्मै नमो भगवते परमामृताय। तेषांसि हि दुष्टशिशुपालककंसकेशी। कालीयकालयवनादिखलेश्वराणां। मानं विमद्य जगति तररक्षणाय। तस्मै नमो भगवते परमामृताय। वासांसि यस्य सकलानि तडिन्निभानि। रूपं नवीन घनसन्निभमाद्यवर्णम्।
नारायणाय नररूपविभूषिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय सुन्दोपसुन्ददलनाय सुदर्शनाय हृत्पद्मनिष्ठशुभविग्रहशोभिताय सद्ब्रह्मचित्तघनपरात्परकेवलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय देवाय भक्तभवसागरतारणाय दुर्दन्तवक्रशिशुपालककर्दनाय लीलार्थमेव जगति तलमागताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वायुस्तथैव वरुणोऽग्निशशाङ्करुद्रा इन्द्रास्वनी सुतकुबेरयमा अजस्वा स्तुवन्ति यं सतमेव समस्तवेदा तस्मै नमो भगवते परमामृताय यस्याक्षरस्य निरवद्य निरञ्जनस्य संसारदुःखहितस्य सुदुर्लभस्य जानन्ति नैव महिमानमशेषजीवा तस्मै नमो भगवते परमामृताय द्वादशाक्षरनामाख्यं स्तोत्रं यद्रचितं मया समर्पयामि देवाय कृष्णाय परमात्मने द्वादशाक्षरसंयुक्तं स्तोत्रं सर्वोत्तमं शिवं यः पठेत् प्रातरुत्थाय ज्ञानं सद्यः स विन्दति सदा सद्भक्तिभावेन ध्यात्वा हरिपदामृतम् पाठमात्रेण सद्भक्तो गच्छेद्धि हरिमन्दिरम् द्वादशाक्षरमन्त्रस्य ऋषिः प्रजापतिः स्मृतः देवता वासुदेवस्य गायत्री छन्द उच्यते ध्रुवो बीजं च हृच्छक्तिर्भुक्तिमुक्त्यौ च प्राप्तये कृत्वैवं विनियोगस्य प्राणायामं चरेत् ततः पूरके षोडशावृत्त्या कुम्भके द्वादश स्मृतः रेचके तु दशावृत्त्या प्राणायामं विधिं चरेत् नासाग्रे लोचन कृत्वा मध्ये हृत्कमले स्थितम् ध्यायेन्नारायणं देवं व्यापकं ब्रह्मरूपिणम् शङ्खचक्रगदा पद्मधरं नीलं चतुर्भुजं पीताम्बरधरं देवं विष्णुं कमललोचनं तुलसीदलसंयुक्ता वनमाला सुशोभितम् सुवर्णमुकुटं रम्यां दिव्यकुण्डलभूषिताम् असङ्ख्यचन्द्रसङ्काश साक्षात् ब्रह्म सनातनम् कैवल्यमोक्षदं सत्यरूपं विश्वात्मकं विभुम् अथवा राधिकानाथं द्विभुजं मुरलीधरम् आजानुबाहुकं दिव्यावदनं श्यामसुन्दरम् मणिमन्मुकुटं तद्वत् कुण्डलं पीतवाससं कस्तूरीतिलकं यस्य ललाटे सर्वमोहनम् तुलसीमालया पद्मामालया मणिमालया शोभितं सान्दितं कृष्णामन्त्रहितकमले स्थितम् ध्यात्वैवं पुरुषं पूर्णं वासुदेवं सनातनम् राजमन्त्रजपं कुर्यात् द्वादशाक्षरनामकम् जपान्ते श्रद्धया युक्तः पाठं कुर्यात् प्रयत्नतः तं दृष्ट्वा भक्तिसंसक्तोर्वासुदेवः प्रसीदति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओंकारमन्त्रमय पूज्य सदक्षराय पादत्रयाक्षरमयाय त्रयीश्वराय वेदत्रयाय त्रिगुणात्मत्रिदेवताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय नम्याय सर्वजनहितकमलस्थिताय चाङ्गुष्टमात्रपुरुषाय विभुत्वगाय ज्योतिर्मयाय तिमिरान्तकनिर्मलाय
तस्मै नमो भगवते परमामृताय मोक्षप्रदाय सुखदाय धनप्रदाय ज्ञानप्रदाय सततं परमोज्ज्वलाय ब्रह्मादिदेव निरकैश्च सुपूजिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय भक्तश्च दुःखदलनाय च रक्षकाय धर्मस्य सन्ततमधर्मविनाशकाय नानावतार पृथिवीतलधारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय गव्यप्रियाय सकलेप्सितसम्प्रदाय सत्यप्रविद्धिकरणाय सुमङ्गलाय कृष्णावतार करुणालय सद्व्रताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वन्द्याय सर्वजगतां सुरसत्तमाय वंशी विभूषितकराय मनोहराय नानाप्रपञ्चविलयोदयकारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय तेषांसि हि दुष्टशिशुपालककंसकेशी कालीयकालयवनादिखलेश्वराणां मानं विमद्य जगति तररक्षणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वासांसि यस्य सकलानि तडिन्निभानि रूपं नवीन घनसन्निभमाद्यवर्णम् नारायणाय नररूप विभूषिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय सुन्दोपसुन्ददलनाय सुदर्शनाय हृत्पद्मनिष्ठ शुभविग्रहशोभिताय सद्ब्रह्मचित्तघनपरात्परकेवलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय देवाय भक्तभवसागरतारणाय दुर्दन्तवक्रशिशुपालककर्दनाय लीलार्थमेव जगति तलमागताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वायुस्तथैव वरुणोऽग्निशशाङ्करुद्रा इन्द्रास्वनी सुदकुबेरयमा अजस्वा सुवन्ति यं सतमेव समस्तवेदा तस्मै नमो भगवते परमामृताय यस्याक्षरस्य निर्वद्य निरञ्जनस्य संसारदुःखहितस्य सुदुर्लभस्य जानन्ति नैव महिमानमशेषजीवा तस्मै नमो भगवते परमामृताय द्वादशाक्षरनामाख्यं स्तोत्रं यद्रचितं मया समर्पयामि देवाय कृष्णाय परमात्मने द्वादशाक्षरसंयुक्तं स्तोत्रं सर्वोत्तमं शिवं यः पठेत् प्रातरुत्थाय ज्ञानं सद्यः स विन्दति सदा सद्भक्तिभावेन ध्यात्वा हरिपदामृतम् पाठमात्रेण सद्भक्तो गच्छेद्धि हरिमन्दिरम् द्वादशाक्षरमन्त्रस्य ऋषिः प्रजापतिः स्मृतः देवता वासुदेवस्य गायत्री छन्द उच्यते ध्रुवो बीजं च हृच्छक्तिर्भुक्तिमुक्त्यौष प्राप्तये कृत्वैवं विनियोगस्य प्राणायामं चरेत्ततः पूरके षोडशावृत्त्या कुम्भके द्वादश स्मृतः रेचके द्वादशावृत्त्या प्राणायामं विधिं चरेत् नासाग्रे लोचन कृत्वा मध्ये हृत्कमले स्थितं ध्यायेन्नारायणं देवं व्यापकं ब्रह्मरूपिणम् शङ्खचक्रगदा पद्मधरं नीलं चतुर्भुजं पीताम्बरधरं देवं विष्णुं कमललोचनं तुलसीदलसंयुक्ता वनमाला सुशोभितं सुवर्णमुकुटं रम्यं दिव्यकुण्डलभूषितं
असङ्खचन्द्रसङ्काश साक्षात् ब्रह्म सनातनम् कैवल्यमोक्षदं सत्यरूपं विश्वात्मकं विभुम् अथवा राधिकानाथं द्विभुजं मुरलीधरम् आजानुबाहुकं दिव्यावदनं श्यामसुन्दरम् मणिमन्मुकुटं तद्वत्कुण्डलं पीतवाससम् कस्तूरीतिलकं यस्य ललाटे सर्वमोहनम् तुलसीमालया पद्मामालया मणिमालया शोभितं सान्दितं कृष्णामन्त्रहितकमले स्थितं ध्यात्वैवं पुरुषं पूर्णं वासुदेवं सनातनम् राजमन्त्रजपं कुर्यात् द्वादशाक्षरनामकं जपान्ते श्रद्धया युक्तः पाठं कुर्यात् प्रयत्नतः तं दृष्ट्वा भक्तिसंसक्तोर्वासुदेवः प्रसीदति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओंकारमन्त्रमय पूज्य सदक्षराय पादत्रयाक्षरमयाय त्रयीश्वराय वेदत्रयाय त्रिगुणात्मत्रिदेवताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय नम्याय सर्वजनहितकमलस्थिताय चाङ्गुष्टमात्रपुरुषाय विभुत्वगाय ज्योतिर्मयाय तिमिरान्तकनिर्मलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय मोक्षप्रदाय सुखदाय धनप्रदाय ज्ञानप्रदाय सततं परमोज्ज्वलाय ब्रह्मादिदेव निरकैश्य सुपूजिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय भक्तस्य दुःखदलनाय च रक्षकाय धर्मस्य सन्ततमधर्मविनाशकाय नानावतार पृथिवीतलधारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय गव्यप्रियाय सकलेप्सितसम्प्रदाय सत्यप्रविद्धिकरणाय सुमङ्गलाय कृष्णावतार करुणालय सद्व्रताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वन्द्याय सर्वजगतां सुरसत्तमाय वंशी विभूषितकराय मनोहराय नानाप्रपञ्चविलयोदयकारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय तेषांसि हि दुष्टशिशुपालककंसकेशी कालीयकालयवनादिखलेश्वराणां मानं विमद्य जगति तररक्षणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वासांसि यस्य सकलानि तडिन्निभानि रूपं नवीन घनसन्निभमाद्यवर्णम् नारायणाय नररूप विभूषिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय सुन्दोपसुन्ददलनाय सुदर्शनाय हृत्पद्मनिष्ठ शुभविग्रहशोभिताय सद्ब्रह्मचित्तघनपरात्परकेवलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय देवाय भक्तभवसागरतारणाय दुर्दन्तवक्रशिशुपालककर्दनाय लीलार्थमेव जगति तलमागताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वायुस्तथैव वरुणोऽग्निशशाङ्करुद्रा इन्द्रास्वनी सुधकुबेरयमा अजस्वा सुवन्ति यं सतमेव समस्तवेदा तस्मै नमो भगवते परमामृताय यस्याक्षरस्य निरवद्य निरञ्जनस्य संसारदुःखहितस्य सुदुर्लभस्य जानन्ति नैव महिमानमशेषजीवा
तस्मै नमो भगवते परमामृताय। द्वादशाक्षरनामाख्यं स्तोत्रं यद्रचितं मया समर्पयामि देवाय कृष्णाय परमात्मने। द्वादशाक्षरसंयुक्तं स्तोत्रं सर्वोत्तमं शिवं यः पठेत् प्रातरुत्थाय ज्ञानं सद्यः स विन्दति। सदा सद्भक्तिभावेन ध्यात्वा हरिपदामृतम् पाठमात्रेण सद्भक्तो गच्छेद्धि हरिमन्दिरम्। द्वादशाक्षरमन्त्रस्य ऋषिः प्रजापतिः स्मृतः देवता वासुदेवस्य गायत्री छन्द उच्यते। ध्रुवो बीजं च हृच्छक्तिर्भुक्तिमुक्त्यौ च प्राप्तये। कृत्वैवं विनियोगस्य प्राणायामं चरेत् ततः। पूरके षोडशावृत्त्या कुम्भके द्वादश स्मृतः। रेचके द्वादशावृत्त्या प्राणायामं विधिं चरेत्। नासाग्रे लोचन कृत्वा मध्ये हृत्कमले स्थितम् ध्यायेन्नारायणं देवं व्यापकं ब्रह्मरूपिणम्। शङ्खचक्रगदा पद्मधरं नीलं चतुर्भुजं पीताम्बरधरं देवं विष्णुं कमललोचनम्। तुलसीदलसंयुक्ता वनमाला सुशोभितम् सुवर्णमुकुटं रम्यां दिव्यकुण्डलभूषिताम्। असङ्ख्यचन्द्रसङ्काश साक्षात् ब्रह्म सनातनम् कैवल्यमोक्षदं सत्यरूपं विश्वात्मकं विभुम्। अथवा राधिकानाथं द्विभुजं मुरलीधरम् आजानुबाहुकं दिव्यावदनं श्यामसुन्दरम्। मणिमन्मुकुटं तद्वत् कुण्डलं पीतवाससं कस्तूरीतिलकं यस्य ललाटे सर्वमोहनम्। तुलसीमालया पद्मामालया मणिमालया शोभितं सान्दितं कृष्णमन्त्रहितकमले स्थितम्। ध्यात्वैवं पुरुषं पूर्णं वासुदेवं सनातनम्। राजमन्त्रजपं कुर्यात् द्वादशाक्षरनामकम्। जपान्ते श्रद्धया युक्तः पाठं कुर्यात् प्रयत्नतः। तं दृष्ट्वा भक्तिसंसक्तोर्वासुदेवः प्रसीदति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओंकारमन्त्रमय पूज्य सदक्षराय पादत्रयाक्षरमयाय त्रयीश्वराय वेदत्रयाय त्रिगुणात्मत्रिदेवताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। नम्याय सर्वजनहितकमलस्थिताय चाङ्गुष्टमात्रपुरुषाय विभुत्वगाय ज्योतिर्मयाय तिमिरान्तकनिर्मलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। मोक्षप्रदाय सुखदाय धनप्रदाय ज्ञानप्रदाय सततं परमोज्ज्वलाय ब्रह्मादिदेव निरकैश्च सुपूजिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। भक्तस्य दुःखदलनाय च रक्षकाय धर्मस्य सन्ततमधर्मविनाशकाय नानावतार पृथिवीतलधारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। गव्यप्रियाय सकलेप्सितसम्प्रदाय सत्यप्रविद्धिकरणाय सुमङ्गलाय कृष्णावतार करुणालय सद्व्रताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। वन्द्याय सर्वजगतां सुरसत्तमाय वंशी विभूषितकराय मनोहराय नानाप्रपञ्चविलयोदयकारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। तेषांसि हि दुष्टशिशुपालककंसकेशी
कालीयकालयवनादिखलीश्वराणां मानं विमद्य जगतीतररक्षणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। वासांसि यस्य सकलानि तडिन्निभानि रूपं नवीनघनसन्निभमाद्यवर्णं नारायणाय नररूपविभूषिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। सुन्दोपसुन्ददलनाय सुदर्शनाय हृत्पद्मनिष्ठशुभविग्रहशोभिताय सद्ब्रह्मचित्तघनपरात्परकेवलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। देवाय भक्तभवसागरतारणाय दुर्दन्तवक्रशिशुपालककर्दनाय लीलार्थमिव जगति तलमागताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। वायुस्तथैव वरुणोऽग्निशशाङ्करुद्रा इन्द्रास्वनी सुदकुबेरयमा अजस्वा सुवन्ति यं सतमेव समस्तवेदा तस्मै नमो भगवते परमामृताय। यस्याक्षरस्य निरवद्य निरञ्जनस्य संसारदुःखहितस्य सुदुर्लभस्य जानन्ति नैव महिमानमशेषजीवा तस्मै नमो भगवते परमामृताय। द्वादशाक्षरनामाख्यं स्तोत्रं यद्रचितं मया समर्पयामि देवाय कृष्णाय परमात्मने। द्वादशाक्षरसंयुक्तं स्तोत्रं सर्वोत्तमं शिवं यः पठेत् प्रातरुत्थाय ज्ञानं सद्यः स विन्दति सदा सद्भक्तिभावेन ध्यात्वा हरिपदामृतं पाठमात्रेण सद्भक्तो गच्छेद्धि हरिमन्दिरम्। द्वादशाक्षरमन्त्रस्य ऋषिः प्रजापतिः स्मृतः देवता वासुदेवस्य गायत्री छन्द उच्यते। ध्रुवो बीजं च हृच्छक्तिर्भुक्तिमुक्त्यौष प्राप्तये कृत्वैवं विनियोगस्य प्राणायामं चरेत् ततः। पूरके षोडशावृत्त्या कुम्भके द्वादश स्मृतः रेचके तु दशावृत्त्या प्राणायामं विधिं चरेत्। नासाग्रे लोचन कृत्वा मध्ये हृत्कमले स्थितं ध्यायेन्नारायणं देवं व्यापकं ब्रह्मरूपिणम्। शङ्खचक्रगदा पद्मधरं नीलं चतुर्भुजं पीताम्बरधरं देवं विष्णुं कमललोचनं तुलसीदलसंयुक्ता वनमाला सुशोभितम् सुवर्णमुकुटं रम्यां दिव्यकुण्डलभूषिताम् असङ्ख्यचन्द्रसङ्काश साक्षात् ब्रह्म सनातनम् कैवल्यमोक्षदं सत्यरूपं विश्वात्मकं विभुम् अथवा राधिकानाथं द्विभुजं मुरलीधरम् आजानुबाहुकं दिव्यावदनं श्यामसुन्दरम् मणिमन्मुकुटं तद्वत् कुण्डलं पीतवाससम् कस्तूरीतिलकं यस्य ललाटे सर्वमोहनम् तुलसीमालया पद्मामालया मणिमालया शोभितं सान्दितं कृष्णमन्त्रहितकमले स्थितं ध्यात्वैवं पुरुषं पूर्णं वासुदेवं सनातनम् राजमन्त्रजपं कुर्यात् द्वादशाक्षरनामकं जपान्ते श्रद्धया युक्तः पाठं कुर्यात् प्रयत्नतः तं दृष्ट्वा भक्तिसंसक्तोर्वासुदेवः प्रसीदति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओंकारमन्त्रमय पूज्य सदक्षराय पादत्रयाक्षरमयाय त्रयीश्वराय
वेदत्रयाय त्रिगुणात्मत्रिदेवताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय नम्याय सर्वजनहितकमलस्थिताय चाङ्गुष्टमात्रपुरुषाय विभुत्वगाय ज्योतिर्मयाय तिमिरान्तकनिर्मलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय मोक्षप्रदाय सुखदाय धनप्रदाय ज्ञानप्रदाय सततं परमोज्ज्वलाय ब्रह्मादिदेव निरकैश्य सुपूजिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय भक्तस्य दुःखदलनाय च रक्षकाय धर्मस्य सन्ततमधर्मविनाशकाय नानावतार पृथिवीतलधारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय गव्यप्रियाय सकलेप्सितसम्प्रदाय सत्यप्रविद्धिकरणाय सुमङ्गलाय कृष्णावतार करुणालय सद्व्रताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वन्द्याय सर्वजगतां सुरसत्तमाय वंशी विभूषितकराय मनोहराय नानाप्रपञ्चविलयोदयकारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय तेषांसि हि दुष्टशिशुपालककंसकेशी कालीयकालयवनादिखलेश्वराणाम् मानं विमद्य जगति तररक्षणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वासांसि यस्य सकलानि तडिन्निभानि रूपं नवीन घनसन्निभमाद्यवर्णम् नारायणाय नररूप विभूषिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय सुन्दोपसुन्ददलनाय सुदर्शनाय हृत्पद्मनिष्ठ शुभविग्रहशोभिताय सद्ब्रह्मचित्तघनपरात्परकेवलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय देवाय भक्तभवसागरतारणाय दुर्दन्तवक्रशिशुपालककर्दनाय लीलार्थमेव जगति तलमागताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वायुस्तथैव वरुणोऽग्निशशाङ्करुद्रा इन्द्रास्वनी सुदकुबेरयमा अजस्वा सुवन्ति यं सतमेव समस्तवेदा तस्मै नमो भगवते परमामृताय यस्याक्षरस्य निरवद्य निरञ्जनस्य संसारदुःखहितस्य सुदुर्लभस्य जानन्ति नैव महिमानमशेषजीवा तस्मै नमो भगवते परमामृताय द्वादशाक्षरनामाख्यं स्तोत्रं यद्रचितं मया समर्पयामि देवाय कृष्णाय परमात्मने द्वादशाक्षरसंयुक्तं स्तोत्रं सर्वोत्तमं शिवं यः पठेत् प्रातरुत्थाय ज्ञानं सद्यः स विन्दति सदा सद्भक्तिभावेन ध्यात्वा हरिपदामृतम् पाठमात्रेण सद्भक्तो गच्छेद्धि हरिमन्दिरम् द्वादशाक्षरमन्त्रस्य ऋषिः प्रजापतिः स्मृतः देवता वासुदेवस्य गायत्री छन्द उच्यते ध्रुवो बीजं च हृच्छक्तिर्भुक्तिमुक्त्यो च प्राप्तये कृत्वैवं विनियोगस्य प्राणायामं चरेत्ततः पूरके षोडशावृत्त्या कुम्भके द्वादश स्मृतः रेचके द्वादशावृत्त्या प्राणायामं विधिं चरेत् नासाग्रे लोचन कृत्वा मध्ये हृत्कमले स्थितम्
ध्यायेन्नारायणं देवं व्यापकं ब्रह्मरूपिणम् शङ्खचक्रगदा पद्मधरं नीलं चतुर्भुजं पीताम्बरधरं देवं विष्णुं कमललोचनं तुलसीदलसंयुक्ता वनमाला सुशोभितम् सुवर्णमुकुटं रम्यां दिव्यकुण्डलभूषिताम् असङ्ख्यचन्द्रसङ्काश साक्षात् ब्रह्म सनातनम् कैवल्यमोक्षदं सत्यरूपं विश्वात्मकं विभुम् अथवा राधिकानाथं द्विभुजं मुरलीधरम् आजानुबाहुकं दिव्यावदनं श्यामसुन्दरम् मणिमन्मुकुटं तद्वत्कुण्डलं पीतवाससं कस्तूरीतिलकं यस्य ललाटे सर्वमोहनं तुलसीमालया पद्मामालया मणिमालया शोभितं सान्दितं कृष्णामन्त्रहितकमले स्थितं ध्यात्वैवं पुरुषं पूर्णं वासुदेवं सनातनम् राजमन्त्रजपं कुर्यात् द्वादशाक्षरनामकम् जपान्ते श्रद्धया युक्तः पाठं कुर्यात् प्रयत्नतः तं दृष्ट्वा भक्तिसंसक्तोर्वासुदेवः प्रसीदति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओंकारमन्त्रमय पूज्य सदक्षराय पादत्रयाक्षरमयाय त्रयीश्वराय वेदत्रयाय त्रिगुणात्मत्रिदेवताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय नम्याय सर्वजनहितकमलस्थिताय चाङ्गुष्टमात्रपुरुषाय विभुत्वगाय ज्योतिर्मयाय तिमिरान्तकनिर्मलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय मोक्षप्रदाय सुखदाय धनप्रदाय ज्ञानप्रदाय सततं परमोज्ज्वलाय ब्रह्मादिदेव निरकैश्च सुपूजिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय भक्तस्य दुःखदलनाय च रक्षकाय धर्मस्य सन्ततमधर्मविनाशकाय नानावतार पृथिवीतलधारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय गव्यप्रियाय सकलेप्सितसम्प्रदाय सत्यप्रविद्धिकरणाय सुमङ्गलाय कृष्णावतार करुणालय सद्व्रताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वन्द्याय सर्वजगतां सुरसत्तमाय वंशी विभूषितकराय मनोहराय नानाप्रपञ्चविलयोदयकारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय तेषांसि हि दुष्टशिशुपालककंसकेशी कालीयकालयवनादिखलेश्वराणां मानं विमद्य जगति तररक्षणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वासांसि यस्य सकलानि तडिन्निभानि रूपं नवीन घनसन्निभमाद्यवर्णम् नारायणाय नररूप विभूषिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय सुन्दोपसुन्ददलनाय सुदर्शनाय हृत्पद्मनिष्ठ शुभविग्रहशोभिताय सद्ब्रह्मचित्तघनपरात्परकेवलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय देवाय भक्तभवसागरतारणाय दुर्दन्तवक्रशिशुपालककर्दनाय लीलार्थमेव जगति तलमागताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वायुस्तथैव वरुणोऽग्निशशाङ्करुद्रा
इन्द्रास्वनी शुदकुबीर्यमा अजस्वा सुवन्ति यं सतमेव समस्तवेदा तस्मै नमो भगवते परमामृताय यस्याक्षरस्य निर्वद्य निरञ्जनस्य संसारदुःखहितस्य सुदुर्लभस्य जानन्ति नैव महिमानमशेषजीवा तस्मै नमो भगवते परमामृताय द्वादशाक्षरनामाख्यं स्तोत्रं यद्रचितं मया समर्पयामि देवाय कृष्णाय परमात्मने द्वादशाक्षरसंयुक्तं स्तोत्रं सर्वोत्तमं शिवं यः पठेत् प्रातरुत्थाय ज्ञानं सद्यः स विन्दति सदा सद्भक्तिभावेन ध्यात्वा हरिपदामृतम् पाठमात्रेण सद्भक्तो गच्छेद्धि हरिमन्दिरम् द्वादशाक्षरमन्त्रस्य ऋषिः प्रजापतिः स्मृतः देवता वासुदेवस्य गायत्री छन्द उच्यते ध्रुवो बीजं च हृच्छक्तिर्भुक्तिमुक्त्यौष प्राप्तये कृत्वैवं विनियोगस्य प्राणायामं चरेत् ततः पूरके षोडशावृत्त्या कुम्भके द्वादश स्मृतः रेचके द्वादशावृत्त्या प्राणायामं विधिं चरेत् नासाग्रे लोचन कृत्वा मध्ये हृत्कमले स्थितं ध्यायेन्नारायणं देवं व्यापकं ब्रह्मरूपिणम् शङ्खचक्रगदा पद्मधरं नीलं चतुर्भुजं पीताम्बरधरं देवं विष्णुं कमललोचनं तुलसीदलसंयुक्ता वनमाला सुशोभितम् सुवर्णमुकुटं रम्यां दिव्यकुण्डलभूषिताम् असङ्ख्यचन्द्रसङ्काश साक्षात् ब्रह्म सनातनम् कैवल्यमोक्षदं सत्यरूपं विश्वात्मकं विभुम् अथवा राधिकानाथं द्विभुजं मुरलीधरम् आजानुबाहुकं दिव्यावदनं श्यामसुन्दरम् मणिमन्मुकुटं तद्वत् कुण्डलं पीतवाससम् कस्तूरीतिलकं यस्य ललाटे सर्वमोहनम् तुलसीमालया पद्मामालया मणिमालया शोभितं सान्दितं कृष्णमन्त्रहितकमले स्थितं ध्यात्वैवं पुरुषं पूर्णं वासुदेवं सनातनम् राजमन्त्रजपं कुर्यात् द्वादशाक्षरनामकम् जपान्ते श्रद्धया युक्तः पाठं कुर्यात् प्रयत्नतः तं दृष्ट्वा भक्तिसंसक्तोर्वासुदेवः प्रसीदति ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओंकारमन्त्रमय पूज्य सदक्षराय पादत्रयाक्षरमयाय त्रयीश्वराय वेदत्रयाय त्रिगुणात्मत्रिदेवताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय नम्याय सर्वजनहितकमलस्थिताय चाङ्गुष्टमात्रपुरुषाय विभुत्वगाय ज्योतिर्मयाय तिमिरान्तकनिर्मलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय मोक्षप्रदाय सुखदाय धनप्रदाय ज्ञानप्रदाय सततं परमोज्ज्वलाय ब्रह्मादिदेव निरकैश्य सुपूजिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय भक्तस्य दुःखदलनाय च रक्षकाय धर्मस्य सन्ततमधर्मविनाशकाय नानावतार पृथिवीतलधारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय गव्यप्रियाय सकलेप्सितसम्प्रदाय सत्यप्रविद्धिकरणाय सुमङ्गलाय कृष्णावतार करुणालय सद्व्रताय
तस्मै नमो भगवते परमामृताय वन्द्याय सर्वजगतां सुरसत्तमाय वंशी विभूषितकराय मनोहराय नानाप्रपञ्चविलयोदयकारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय तेषांसि हि दुष्टशिशुपालककंसकेशी कालीयकालयवनादिखलेश्वराणाम् मानं विमद्य जगति तररक्षणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वासांसि यस्य सकलानि तडिन्निभानि रूपं नवीन घनसन्निभमाद्यवर्णम् नारायणाय नररूप विभूषिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय सुन्दोपसुन्ददलनाय सुदर्शनाय हृत्पद्मनिष्ठशुभविग्रहशोभिताय सद्ब्रह्मचित्तघनपरात्परकेवलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय देवाय भक्तभवसागरतारणाय दुर्दन्तवक्रशिशुपालककर्दनाय लीलार्थमेव जगति तलमागताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वायुस्तथैव वरुणोऽग्निशशाङ्करुद्रा इन्द्रास्वनी सुदकुबेरयमा अजस्वा स्तुवन्ति यं सतमेव समस्तवेदा तस्मै नमो भगवते परमामृताय यस्याक्षरस्य निरवद्य निरञ्जनस्य संसारदुःखहितस्य सुदुर्लभस्य जानन्ति नैव महिमानमशेषजीवा तस्मै नमो भगवते परमामृताय द्वादशाक्षरनामाख्यं स्तोत्रं यद्रचितं मया समर्पयामि देवाय कृष्णाय परमात्मने द्वादशाक्षरसंयुक्तं स्तोत्रं सर्वोत्तमं शिवं यः पठेत् प्रातरुत्थाय ज्ञानं सद्यः स विन्दति सदा सद्भक्तिभावेन ध्यात्वा हरिपदामृतम् पाठमात्रेण सद्भक्तो गच्छेद्धि हरिमन्दिरम् द्वादशाक्षरमन्त्रस्य ऋषिः प्रजापतिः स्मृतः देवता वासुदेवस्य गायत्री छन्द उच्यते ध्रुवो बीजं च हृच्छक्तिर्भुक्तिमुक्त्यौष प्राप्तये कृत्वैवं विनियोगस्य प्राणायामं चरेत्ततः पूरके षोडशावृत्त्या कुम्भके द्वादश स्मृतः रेचके द्वादशावृत्त्या प्राणायामं विधिं चरेत् नासाग्रे लोचन कृत्वा मध्ये हृत्कमले स्थितं ध्यायेन्नारायणं देवं व्यापकं ब्रह्मरूपिणम् शङ्खचक्रगदा पद्मधरं नीलं चतुर्भुजं पीताम्बरधरं देवं विष्णुं कमललोचनं तुलसीदलसंयुक्ता वनमाला सुशोभितं सुवर्णमुकुटं रम्यां दिव्यकुण्डलभूषितम् असङ्ख्यचन्द्रसङ्काश साक्षात् ब्रह्म सनातनम् कैवल्यमोक्षदं सत्यारूपं विश्वात्मकं विभुम् अथवा राधिकानाथं द्विभुजं मुरलीधरम् आजानुबाहुकं दिव्यावदनं श्यामसुन्दरम् मणिमन्मुकुटं तद्वत्कुण्डलं पीतवाससं कस्तूरीतिलकं यस्य ललाटे सर्वमोहनम् तुलसीमालया पद्मामालया मणिमालया शोभितं सान्दितं कृष्णामन्त्रहितकमले स्थितं ध्यात्वैवं पुरुषं पूर्णं वासुदेवं सनातनम्
राजमन्त्रजपं कुर्यात् द्वादशाक्षरनामकाम् जपान्ते श्रद्धया युक्तः पाठं कुर्यात् प्रयत्नतः तान् दृष्ट्वा भक्तिसंसक्तोर्वासुदेवः प्रसीदति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओंकारमन्त्रमय पूज्य सदक्षराय पादत्रयाक्षरमयाय त्रयीश्वराय वेदत्रयाय त्रिगुणात्मत्रिदेवताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय नम्याय सर्वजनहितकमलस्थिताय चाङ्गुष्टमात्रपुरुषाय विभुत्वगाय ज्योतिर्मयाय तिमिरान्तकनिर्मलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय मोक्षप्रदाय सुखदाय धनप्रदाय ज्ञानप्रदाय सततं परमोज्ज्वलाय ब्रह्मादिदेव निरकैश्च सुपूजिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय भक्तस्य दुःखदरणाय च रक्षकाय धर्मस्य सन्ततमधर्मविनाशकाय नानावतार पृथिवीतलधारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय गव्यप्रियाय सकलेप्सितसम्प्रदाय सत्यप्रविद्धिकरणाय सुमङ्गलाय कृष्णावतार करुणालय सद्व्रताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वन्द्याय सर्वजगतां सुरसत्तमाय वंशी विभूषितकराय मनोहराय नानाप्रपञ्चविलयोदयकारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय तेषांसि हि दुष्टशिशुपालककंसकेशी कालीयकालयवनादिखलेश्वराणां मानं विमद्य जगति तररक्षणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वासांसि यस्य सकलानि तडिन्निभानि रूपं नवीन घनसन्निभमाद्यवर्णम् नारायणाय नररूप विभूषिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय सुन्दोपसुन्ददलनाय सुदर्शनाय हृत्पद्मनिष्ठ शुभविग्रहशोभिताय सद्ब्रह्मचित्तघनपरात्परकेवलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय देवाय भक्तभवसागरतारणाय दुर्दन्तवक्रशिशुपालककर्दनाय लीलार्थमेव जगति तलमागताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वायुस्तथैव वरुणोऽग्निशशाङ्करुद्रा इन्द्रास्वनी सुदकुबेरयमा अजस्वा सुवन्ति यं सतमेव समस्तवेदा तस्मै नमो भगवते परमामृताय यस्याक्षरस्य निरवद्य निरञ्जनस्य संसारदुःखहितस्य सुदुर्लभस्य जानन्ति नैव महिमानमशेषजीवा तस्मै नमो भगवते परमामृताय द्वादशाक्षरनामाख्यं स्तोत्रं यद्रचितं मया समर्पयामि देवाय कृष्णाय परमात्मने द्वादशाक्षरसंयुक्तं स्तोत्रं सर्वोत्तमं शिवम् यः पठेत् प्रातरुत्थाय ज्ञानं सद्यः स विन्दति सदा सद्भक्तिभावेन ध्यात्वा हरिपदामृतम् पाठमात्रेण सद्भक्तो गच्छेद्धि हरिमन्दिरम्।